Hello everyone, I'm Amodini. I'm studying in IIIT Sricity in the branch of computer science. And then today I'll be taking up a few questions that every one of you have asked. And so let's start without delaying. Okay, so the first question is dielectric constant of metal is infinite. Why? So, firstly, what do we know about dielectric constant? The dielectric constant is also called relative permittivity, right? Yes. So, what is relative permittivity? तो वी हम इसे ई आर भी लिख सकते हैं, राइट? तो ई आर इज इक्वल टू ई बाई ई नॉट लिखते हैं हम. सो व्हाट इज ई एंड व्हाट इज ई नॉट? सो बेसिकली ई का मतलब ये है कि E is the permittivity of material, है ना? तो E नॉट क्या है? तो फिर E नॉट इज दी permittivity of free space. Free space या basically हम vacuum जब भी बोलते हैं, so that is when we use E नॉट. Now, so coming to the answer, डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, वो एक रेशियो है, वो हमें दिख रहा है. सो दिस रेशियो टेल्स अस हाउ मच अ मटेरियल रिड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट कंपेयर टू अ वैक्यूम. तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट? बाहर भी है और अंदर भी है. सो हाउ मच इट रिड्यूसेस जब हम वैक्यूम के साथ कंपेयर करते हैं. सो दिस इज व्हाट दिस रेशियो टेल्स अस. ठीक है. तो अभी हम एक आइडियल मेटल के बारे में बात करेंगे. तो इन स्टैटिक कंडीशंस का मतलब ये है कि हमारे फ्रीक्वेंसीज जो है लो रहेंगे. Okay, so the free electrons rearrange perfectly to cancel out the electric field inside the metal. This means that the electric field inside the metal is zero. तो बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो होता है वो जीरो हो जाता है. सो अभी लेट्स से दिस इज द मेटल, राइट? सो द इलेक्ट्रॉन्स ऐसे अरेंज कर जाते हैं सच दैट दे कैंसल आउट. So now you can see this, and then this and this and this. They get cancelled out. तो क्या हो जाएगा हमारा? तो फिर हमारा जो एप्सिलॉन आर है that will become infinite, right? So this happens because the polarization in the metal is so large due to the movement of free electrons that it creates an infinite response to the electric field. सो इसमें की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, जो हमें याद रखना है कि ये है कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को जो है उसे मूव कराता है, और जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैंसिल आउट करा देता है, जिसकी वजह से हमारा जो ई आर है इनफाइनाइट हो जाता है जब भी स्टैटिक या फिर लो फ्रीक्वेंसी फील्ड्स होते हैं. So, what does this imply? It implies that the metal is a perfect conductor and blocks the electric field completely inside it, leading to an infinite dielectric constant. So, with this, we'll be wrapping up with the first question. Abhi, the second question is, state derivation of second law is real law of motion. Okay, so what do we know about the second law? So basically, if we actually think about it, जो first law और second law है, they are more like the special cases of the second law. ठीक है? So basically, the second law of motion is considered the real law of motion because it mathematically defines how forces affect the motion of an object. So basically, हम लोग जो F is equal to m है बोलते हैं, this is being derived from the second law, right? The first law और second third law में more like एक एक्शन का एक रेस्पॉन्स होता है, ऐसी चीजें हम सीखते हैं.
So therefore we can call this as the real law of motion. So coming to it, so we can see here, like I've written, Newton's second law of motion states that F is equal to ma. So F is the net force acting on an object, m is the mass of the object, and a is the acceleration of the object, right? So basically हम लोग समझते हैं फोर्स क्या है. फोर्स क्या है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे लाइक कुछ प्रेशर, या फिर आम भाषा में प्रेशर ही बोलते हैं हम, तो ऐसे कुछ धक्का दिया हमने, तो अगर उस धक्के की वजह से दिस ऑब्जेक्ट मूव्स या फिर टिल्ट हो जाएगा या फिर कुछ तो चेंज आएगा उसमें, तो उसे हम फोर्स बोलते हैं, राइट? सो फर्स्ट लॉ एज अ स्पेशल केस क्या है? It says that Newton's first law states that an object in motion stays in motion at a constant velocity or remains at rest unless acted upon by a net force. So basically first law क्या कहता है? अगर जब तक हम एक ऑब्जेक्ट पे कुछ फोर्स या कुछ नहीं लगाते हैं, तो वो जैसा है वैसा ही रहेगा. अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, या फिर अगर इट इज स्टैग्नेंट तो स्टैग्नेंट ही रहेगा. ओके, so let's come to the derivation basically. So हम लोगों को पता है कि P is equal to mv. What is P here? It is the momentum, right? And m is the mass and v is velocity, right? We know this much. And we also know that wherein the second law states that force is what? The rate of change of momentum with time, right? So that is dp by dt. So what I can write is p का मैं सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ, डी एम वी बाई डी टी लिख सकती हूँ. हम लोगों को पता है कि मास टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, सो एक ही चीज चेंज होता है और वो है वेलोसिटी. एंड वी नो दैट ये जो dv बाई dt है ये एक्सेलरेशन होता है, तो हम इसे लिखेंगे F is equal to ma. And this is how we came to this formula. तो इस वजह से हम इसे रियल लॉ बोलते हैं, राइट? So therefore we can tell that force is directly proportional to the mass of the object and acceleration it experiences, right? थर्ड लॉ का क्या है? थर्ड लॉ में हम ये जानते हैं that for every action there is an equal and opposite reaction. This law is a consequence of the second law applied to two interacting bodies. When two bodies interact, the forces they exert on each other result in equal and opposite acceleration due to the second law. So for example, let's say यहाँ पे एक ball है और यहाँ पे भी एक ball है. So they both roll and then they clash. जब clash होता है, they bounce back, right? So this, each action has each reaction. Okay, so we got to know that one thing. Now coming to the next question, so it is a very related question. So what is force? So if we have to talk about the definition, तो हम ये बोल सकते हैं कि force is a fundamental concept in physics, right? Force के बिना there are like many topics wherein हम लोग force के बारे में बार बार ही पढ़ेंगे. So therefore it is one of the fundamental topics, right? So it is defined as any interaction that can change the state of motion of an object. In simpler terms, a force can cause an object to start moving, stop moving, change direction, or change its speed. So like I gave an example already, ये जो अभी मेरे पास एक कार्टन बॉक्स है, मैं इस पे अगर फोर्स लगाऊंगी तो ये आइदर मूव होगा या फिर मैं इसे टिल्ट करवा सकती हूँ, लाइक थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करवा सकती हूँ फोर्स की वजह से, राइट? या फिर लेट्स से दो बॉल्स का जो मैंने अभी अभी एग्जाम्पल दिया था, उन दोनों का फोर्स की वजह से डायरेक्शन चेंज हो जाता है, या फिर स्पीड अगर फ्रिक्शन का ले लेते हैं,
सो लेट्स से यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं था और एकदम से यहाँ पे फ्रिक्शन आ गया, तो फ्रिक्शन जब आता है हमारा जो वेलोसिटी है वो कम हो जाता है, राइट। तो ऐसे थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स है, राइट। तो फोर्स is what? Force is equal to mass into acceleration, and we know that acceleration is a vector quantity, and therefore force is also a vector quantity. जब हम vector quantity के बारे में बात करते हैं उसका मतलब ये होता है कि हम लोग इस फोर्स का जो है मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, राइट। तो ये दो चीजें हमें पता है। एंड देन इसका जो SI यूनिट है वो है न्यूटन, and we'll denote it like N. And 1 Newton is equal to 1 kg meter per second square, right? So, yeah. And then with this, I'll also give you an example. तो थोड़े बहुत examples दे दिए हैं, but everyday examples में बात किया जाए तो kicking a football. So when you kick a football, you apply a force that makes the ball move and accelerate in the direction of the kick, right? तो similarly, अगर हम कोई एक book भी उठा रहे हैं, तो how do you like lift it? You exert an upward force that counters the gravitational force pulling down the book, right? अभी ये एक book है, right? तो when you lift it up, यहाँ पे gravity भी act कर रहा है, लेकिन आप जो force लगा रहे हैं वो upward की तरफ होता है, इसीलिए you'll be able to lift it. Okay, so with this, we'll be going to the next question. So the next question is, why Goldstein didn't take a vacuum in anode ray experiment? Okay, so yeah. So basically, when Goldstein was experimenting, he did not take up vacuum, rather he used gas. So we'll be learning about it now. Goldstein didn't use a vacuum in his anode ray experiment because the experiment relied on the presence of gas atoms to produce positive ions, which were essential for the formation of anode rays, right? So this was his anode ray, right? So basically, if you had taken vacuum, then you wouldn't have had positive ions. So therefore, gas atoms were used in that. So what exactly was the objective of Goldstein's experiment? So the goal of Goldstein experiment was to study anode rays. Anode rays को हम canal rays भी बोलते हैं, which are streams of positively charged particles observed in a gas discharge tube. To create these rays, gas inside the tube had to be ionized, which wouldn't happen in vacuum. So जैसे मैंने बोला, vacuum का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि there is nothing inside, like not even air, nothing, zero. तो अगर कुछ रहेगा ही नहीं, then how would ionization happen and positive ions कैसे create होंगे, right? तो उसकी वजह से Goldstein had to use gas atoms, right? So this was done. And now coming to the next question, obtain an expression for the position vector of center of mass of two particle system. So when we talk about center of mass, so what exactly it is? So the center of mass, RCM, of the two particle system can be defined as the weighted average of the position vectors of the particles weighted by their masses. So basically, let's derive this. Okay, so let's say two bodies particles hai m1 comma m2. Because it is a two particle system, so this is a two particle system, right? Iska m1 hai aur iska m2 le liya humne, right? Let r1 and r2 be the position vectors.
let's say this is our reference point, ठीक है? So इस reference point से let this be R1 and let this be R2, right? So R1 and R2 are the position vectors, okay? So to find the center of mass, RCM is the center of mass, okay? So the formula, what is the formula? Weighted average जब हम बोलते हैं, it is basically M1 R1 plus M2 R2 divided by M1 plus M2. Here we can see that RCM is basically the position, and position के लिए हमें R चाहिए, and we can see that हमारे dimensionality जो है वो preserved है, right? So weighing by mass जो है, each position vector is weighted by the mass of the corresponding particle. So basically जो contribution है first particle का वो है M1 R1. Similarly second particle का जो है वो है M2 R2, right? So M2 R2 है, right? And the total mass, this is the total mass, right? M1 plus M2. So combining the contributions, you'll get this. So this formula indicates that the position of the center of mass is closer to the position of the particle with greater mass. Isn't it obvious? Agar iska, let's say M1 is like very heavy, let's say 10 kg, and M2 is 2 kg, then we can see that this RCM will be more inclined towards M1, right? This is the middle point, but it wouldn't be at middle, right? It would be towards the heavier object, okay? This is 10 kg and this is 2 kg. So the center of mass acts as a single point where the entire mass of the system can be considered to be concentrated for the purposes of motion analysis, right? So let's take an example here, okay? So let's say M1, I'll take it up as 2 kg, and let's say R1 to be 1, 0. Or let's just take it as, for simplicity, I'll take it as 1, okay? M2 is equal to 3 kg. So I'll take this to be 4. So now, by using the formula, I can calculate it like 2 into 1. Okay, no wait, 1, 0 लेते हैं, 4, 0. तो एक x coordinate बनेगा और इसका एक y coordinate बनेगा. So I'll do it like 2, 1, 0. Let's move this out here. So RCM is equal to 2 into 1, 0 plus 3 into 4, 0 divided by the total mass, that is 2 plus 3. So I can write it like, so I'll get it as 2, 0 plus 3 4s are 12, 12, 0 by 5, right? And I can further write it like 14, 0 by 5, which will give it as 2.8, 0. So basically इस जो 2 kg और 3 kg का जो है उसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा 2.8 मीटर पे, right? So that would basically be somewhere over here and not in the middle, okay? So with this, we covered this question. Abhi, we'll move on to the next question. So the next question is that the magnetic moment of an electron with orbital angular momentum J will be what? So basically, what do we know about the magnetic momentum? So magnetic moment is basically हम लोग इसे mu बोलते हैं, right? So a mu of an electron with
orbital angular momentum J can be derived from the relationship between the angular momentum and the magnetic moment, right? So ये दोनों एक इलेक्ट्रॉन का है, right? So how do we do that? First of all, what is the magnetic moment? Due to an orbital motion. उसका मतलब क्या है? So basically it is given by what? तो हम magnetic moment को लिख सकते हैं like minus E by 2mj, right? So here we know that mu is magnetic moment और m जो है mass of electron है, right? E है charge of electron and j is the orbital angular momentum, right? And as far as we know, E का जो charge है, that is approximately 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, right? And mass है 9.11 into 10 to the power minus 31 kg, right? Coming to J. What exactly is J? J को हम लिख सकते हैं like J is the orbital angular momentum and that is mr cross v, and r is the position vector of electron and v is the velocity vector, right? So substituting the angular momentum into the magnetic moment equation, we express it like mu is equal to minus E by 2mj, right? Thus, the magnetic moment of an electron with orbital angular momentum j is given by this formula, right? So this was pretty easy, but so what is the significance? अभी इतना तो हम समझ गए कि how do we derive it, right? But what is the significance? Like, why is there a negative sign, right? So जो negative sign है वो ये indicate करता है कि जो हमारा magnetic moment है वो opposite direction है angular momentum से. That is because of the negative charge of the electron. And this relationship shows that magnetic moment is directly proportional to the angular momentum, meaning that as the angular momentum of the electron increases, so does its magnetic moment, right? So with this, we'll move on to the next question. Okay, so what is the principle of conservation of mechanical energy? So when it comes to conservation, हमें ये पता है कि हमें बचाना है. So basically, जो कुछ भी spend होगा initially or finally, it has to be the, let's say, energy ही बोल देते हैं, right? Energy. Finally, it should be the same. This is what we mean by conservation, right? In अभी नॉर्मल भी हम बात करते हैं तो कंजर्वेशन इज व्हाट, बचाना. सो पहले जो था उतना ही बाद में भी रहना चाहिए. सो दिस इज व्हाट इट इज इन लेमैन टर्म्स, राइट? सो द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी स्टेट्स दैट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, सो हमें ये नहीं भूलना है कि वो आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए. इट शुडंट बी लाइक बाकी बहुत से फोर्सेस भी एक्ट कर रहे हैं उस कोई ऑब्जेक्ट पे, राइट? The total mechanical energy remains constant. So, mechanical energy, what exactly is mechanical energy? Mechanical energy जो है, हाँ, it is a sum of kinetic energy and potential energy. So, when we talk about kinetic energy, we know that kinetic energy is equal to half mv square, where m is the mass and v is the velocity, right? And kinetic energy के बारे में जब हम बात करते हैं, वी नो दैट जो ये काइनेटिक एनर्जी है वो मोशन की वजह से होता है, राइट? व्हेन देयर इज मोशन तभी तो वेलोसिटी होगा, राइट? सो वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज दिस.
अभी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हैं. सो पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन इन अ फील्ड. सो बेसिकली जब रेस्ट पे होता है या फिर कोई किसी पोजीशन पे है एक फील्ड में, तो उसकी वजह से जो एनर्जी है उस बॉडी में, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी, राइट. एंड अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करूंगी तो इट विल बी mgh, where m is the mass, g is gravitational gravity, and h is the height, right? We know this much. And what is the total mechanical energy? Total mechanical energy is basically the sum. So we can write it as TME is equal to KE plus PE, right? So according to the principle of conservation of mechanical energy, we know that KE initial, so जो kinetic energy initially है, plus the potential energy initially should be equal to kinetic energy finally plus potential energy finally, right? Where, like I can tell, it's been written initial or final पे जो है वो है. So this principle implies that the energy can transform from one form to another. For example, potential energy can convert into kinetic energy and vice versa, right? But the total mechanical energy remains constant as long as no non-conservative forces like friction या air resistance अगर उन एक सिस्टम पे नहीं है, तो तभी ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करता है. लेकिन अगर फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस है, सो देन दिस डजंट होल्ड ट्रू, राइट? ओके, सो नेक्स्ट, explain rocket propulsion in detail, right? So basically what exactly do we mean by rocket propulsion? So rocket propulsion is based on the principle of Newton's third law of motion. और हम लोगों ने आज ही पढ़ा है कि Newton's third law of motion states that for every action there is an equal and opposite reaction, है ना? So in जो ये rocket propulsion होता है उसमें action ये है कि exhaust जो है gases का, exhaust gases rocket engine से वो एक action है, and the reaction will be the forward motion. So this is a very bad drawing of a rocket. Then yeah, and this is the exhaust gases, right? And this is the forward motion. Right. According, अगर हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को यहाँ पे लाएंगे तो we can see that जो F thrust है that is equal to minus of X exhaust. यहाँ पे माइनस क्यों आ रहा है? Any idea? It is because of the opposite direction. ये हमारा जो thrust है upward motion में है और ये हमारा जो exact exhaust gases का है उनका downward direction में है, right? So therefore these both are equal but direction में opposite है. So the rocket experiences a force F thrust in the forward direction, while the expelled gases experience a force F exhaust in the opposite direction. This is why rockets can travel in the vacuum of space. They don't need to push against the ground or air. So they simply rely on the internal combustion of fuel and the expulsion of gases, right? So they don't need an external push or something. इंटरनली कंबशन होता है फ्यूल का जिसकी वजह से एक्सपल्शन होता है, एंड देयरफॉर दैट गिव्स इन अ रिएक्शन दैट इज फॉरवर्ड मोशन ऑफ द रॉकेट, राइट? सो नेक्स्ट लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the least count and zero correction, if any, for the AC, ammeter and voltmeter. Okay,
So let's take the case for AC ammeter right now. Definition. What is the definition? What does an ammeter know? Like we already know, ammeter measures the current flowing through a circuit, right? And हम लोग इससे ऐसे डिनोट करते हैं सर्किट डायग्राम्स में, राइट? सो बेसिकली वो जो करंट फ्लो रहता है एक सर्किट में वो मेजर करता है. एंड जब हम लीस्ट काउंट के बारे में बात करते हैं, वो बेसिकली है smallest value of current that can be measured by the instrument. Okay. एंड वही बात जीरो करेक्शन. व्हाट एग्जैक्टली जीरो करेक्शन? सो ये बेसिकली एक एडजस्टमेंट है जो हम करते हैं मेड टू द रीडिंग ऑफ अकाउंट रीडिंग to account for any error when the ammeter reads zero with no current flowing, right? So इस पे we'll just write the formula, right? So LC is equal to smallest divisions. Okay, let's get here a little. So LC is equal to smallest divisions by number of subdivisions. So basically एक example लेते हैं. If the smallest division of ammeter scale is 2 ampere बोलते हैं, okay? Let's just say it is 2 ampere and अगर 10 subdivisions है तो simple division है, हमें ये पता चलता है कि हमारा जो लीस्ट काउंट होगा 2/10 होगा, राइट? 0.2 ampere, राइट? सो बेसिकली इट कैन जो हमारा एमीटर है वो 0.2 एम्पियर तक मेजर कर सकता है अगर उतना कम है तो. लेट्स से एक करंट आता है दैट इज लेस देन 0.2, लेट्स से 0.1 आ जाता है तो फिर वो मेजर नहीं कर पाता है. सो दिस इज व्हाट लीस्ट काउंट मींस. और वैसे जीरो करेक्शन के बारे में बात किया जाए तो let's say if the ammeter reads 0.5 ampere, ठीक है, when no current is flowing, there's no current flowing, but then जो हमारा ammeter है उस पे दिखाई दे रहा है कि 0.5 एम्पियर है, तो तब हम जीरो करेक्शन को ऐसे करते हैं जैसे इट विल अकाउंट टू जीरो, मतलब ऐड करने पे जीरो आना चाहिए. अगर ये 0.5 है तो मैं क्या ऐड कर सकती हूँ जिससे टोटल जीरो हो जाए? ऑब्वियसली हम -0.5 एम्पियर ऐड कर देंगे. सो ये जो वैल्यू है इसे हम जीरो करेक्शन बोलते हैं, राइट? सो ये हमारा एसी एमीटर के बारे में हो गया. लेट्स टॉक अबाउट एसी वोल्टमीटर. सो एमीटर इज फॉर करंट एंड सिमिलरली वोल्टमीटर जो है हमारा वो है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए. दैट इज बेसिकली वोल्टेज, राइट? अ वोल्टमीटर मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 points in a circuit. So we know that, right? Let's say यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है. So ये मेरा पॉइंट A है और पॉइंट B है. तो मेरा जो वोल्टमीटर होगा वो मेजर करेगा इन पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है. सो लीस्ट काउंट वोल्टमीटर और एमीटर का सेम है. सो बेसिकली हम लोगों ने देखा था कि लीस्ट काउंट इज इक्वल टू smallest divisions by number of subdivisions.
It's the same for both ammeter and voltmeter. Right. तो let's just say मेरा जो smallest division है वो है 10 volt और voltmeter में है 5 सब divisions. तो हमारा least count हो जाएगा 10V by 5 and that is equal to 2 volts. Right. And then let's talk about zero correction. Zero correction is also similar. As with the ammeter, the zero correction for the voltmeter is the adjustment made to account for any reading when the voltage is supposed to be zero. So let's just say voltage हमारा actual में zero होना चाहिए, ठीक है? Like क्योंकि कोई potential difference है ही नहीं. But then दिखाई दे रहा है voltmeter पे कि the reading is 0.2 volt. So what would be our zero correction? It would be such that हमारा sum 0 होना चाहिए. So it should be minus 0.2 volt. Right? Okay. So now let's move on to the next question. What is centripetal force? So centripetal force is the force that acts on an object moving in a circular path directed towards the center of the circle around which the object is moving. So let's say एक circular path है हमारा, okay? And ये हमारा एक car है जो इस circular path में move हो रहा है, right? So इस object का जो है towards the center of circle एक force feel होता है और इस force को हम centripetal force बुलाते हैं. Okay. So this force is responsible for keeping the object in its circular motion. Okay. So ये ऐसे ऐसे move हो रहा है. It is ये जो है हमारा जो towards the center है act कर रहा है जो force ही हमारा उसका ये responsibility है कि इस जो object है जो हमारा car है उसको circular motion में रखे रहे. Okay. So what are the key characteristics of the centripetal force? Direction. The centripetal force always points towards the center of the circular path, right? So जो हमारा centripetal force है, it always points towards the center of the circle. We know that. And what about the magnitude? हम इस magnitude को लिखते हैं Fc is equal to mv square by r. Okay. And here m is the mass of the object और हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे कार है तो इट इज द मास ऑफ द कार. v square is the tangential velocity. What is the tangential velocity? मतलब लेट्स से यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो इस तरफ का वेलोसिटी होता है बेसिकली परपेंडिकुलर रहता है. So this is the tangential velocity, right? Yeah. And r is the radius of the circular path. तो ये हमारा r है. Okay. What exactly is required for circular motion? So basically जो हमारा centripetal force है, it is a must for our circular motion. Without this force, an object would move in a straight line due to inertia, right? तो इसीलिए centripetal force is a very, very important force when it comes to circular motion. And let's now talk about the examples. So examples of centripetal force include a satellite in an orbit. A satellite orbiting the Earth is held in its circular path by what exactly? Our gravitational pull. So ये हमारा Earth है. And let's just say this is our satellite. What is pulling it towards the center is that it's the gravitational pull.
Here, this acts as the centripetal force. Okay. And then car turning on a curved path. I just took that example. When a car makes a turn on a curved road, friction between the tires and the road provides the centripetal force needed to change the direction of the car's motion. If the friction is insufficient, let's say example एक बारिश हो गई हो या फिर आइसी रोड हो, तब जो हमारा कार होता है वो स्किड हो सकता है in the outwardly. So it could deviate and go here, right? And that's why it's like if you like observe hill areas may and everything, they drive really carefully and there are like many turns and everything, right? So string and a whirling object. This is also a very nice example. Let's say there's a boy here and he has a string and an object tied to it. So when he turns it, ये जो हमारा टेंशन है स्ट्रिंग के अंदर वो इनवर्ड्सली जो सेंट्रिपिटल फोर्स है उसकी तरह एक्ट करता है. Next question. How to find the coefficient of friction? So what exactly is coefficient of friction? हम लोग इसे म्यू की तरह डिनोट करते हैं. So ये जो है ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है. Right. Why is it dimensionless? Because इसका जो रेशियो है उन दोनों का डायमेंशंस जो है सेम है. So it is basically what? F by Fn. And what is F? F is the frictional force. And this is the normal force. Normal force हमेशा perpendicular होता है to the surface of contact, right? So we know this much. Yeah. And this will basically cover up this question. Next question. What is friction? So we just spoke about friction in the circular motion part, and we just previously encountered the question about coefficient of friction. So what exactly is friction? So friction is a force that opposes the relative motion between two surfaces in contact. So basically, let's say ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है. यहाँ पे मैं एक फोर्स लगा रही हूँ. ये जो है हमारा जो बीच में, इसे हम सरफेस ऑफ कांटेक्ट बुलाते हैं. राइट. ये हमारा सरफेस ऑफ कांटेक्ट है. और जब मैं इस तरफ फोर्स लगा रही हूँ, ये जो हमारा फ्रिक्शन है it'll act in the opposite direction. So it'll act this way. My small f is the friction. Okay. So it basically opposes, हमेशा oppose करता है. Here it might seem that जो हमारा surface of contact है पूरा straight है, but then actual में जो surface of contact होता है, it'll be very irregular. It'll be something like this, and these will be our points of contacts. And यहाँ पे exert होता है हमारा friction. So if we talk about the types of friction, okay, so before that, how does it arise? It arises due to the interactions between the microscopic surfaces of the materials involved, right? So now let's talk about the types of friction. So types of friction may, we know that there are static friction. Like the name suggests, static friction is the force that must be overcome to start moving an object from at rest. Okay, so basically मेरा जो एक ऑब्जेक्ट था वो रेस्ट पे था. ओके, नाउ आई वांट इट टू स्टार्ट मूविंग. सो जो ये शुरू में स्टार्ट कराने के लिए जो एक फ्रिक्शन रहता है,
हम उसे स्टैटिक फ्रिक्शन बुलाते हैं और उसे डिनोट करते हैं Fs से, राइट। और हम इससे बोल सकते हैं म्यू एस एफ एन, and this will be our normal, right? Fn. Yeah. And then coming to the kinetic friction. Kinetic friction is the force that opposes the motion of two surfaces sliding past each other. So kinetic का मतलब क्या है? It's already in motion. So similarly, जब एक बॉडी ऑलरेडी मोशन में है एक सरफेस पे, so जो दो सरफेस ऑलरेडी इट्स लाइक दोनों मोशन में है अभी, सो देयरफॉर जो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन आता है उसे हम काइनेटिक फ्रिक्शन बुलाते हैं. सो दैट कैन बी रिटन एज म्यू के टू एफ एन. ये जो म्यू एस है और म्यू के है, इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन व्हेन इट इज स्टैटिक एंड व्हेन इट इज काइनेटिक, राइट. And let's come to the rolling friction. Rolling friction is the resistance encountered when an object rolls over a surface. So let's just say एक plank है हमारे पास and then the body starts rolling. So इस point पे जो हमारा है friction, उसे हम rolling friction बुलाते हैं, right? Okay, so let's talk about the importance of friction. So why is it important? अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम ऐसे लेट्स से भाग लाइक आईसी स्पेसेस पे फ्रिक्शन कम होता है और हम स्किड होके गिर जाते हैं. सो ऐसे सिचुएशंस होंगे अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो. फ्रिक्शन इज एसेंशियल फॉर वॉकिंग, ड्राइविंग एंड होल्डिंग ऑब्जेक्ट्स, राइट. इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस पे आता है. इसमें क्या है? अंडरस्टैंडिंग फ्रिक्शन इज क्रिटिकल इन डिजाइनिंग मशीन्स एंड ensuring सेफ्टी. सो अगर हम फ्रिक्शन को समझे बिना अगर हमने कोई कार बना दिया या टायर्स बना दिए तो that would just lead to disasters, right? So therefore friction is a very important aspect when it comes to engineering. So let's move on to the next question. What is photoelectric effect? The photoelectric effect is the phenomenon in which electrons are emitted from a material when it absorbs light of sufficient energy, right? So photoelectric effect, like the name suggests, photo matlab light and electric is electric, right? So basically ये phenomenon ऐसा है कि electrons जो है वो emit हो जाते हैं एक material से, कभी mostly it is a metal when it absorbs light. Okay, so इसमें थोड़े से जो terms होते हैं which are like very important. तो one of few of these terms are threshold frequency. जो threshold frequency is basically that, threshold का मतलब ये है कि एक बार सेट रहता है कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एफ नॉट है जिससे अगर ज्यादा हो गया, it's very mandatory to have that minimum frequency of light so that इलेक्ट्रॉन्स एजेक्ट हो सकते हैं हमारे सरफेस से. अगर उससे कम है, लाइक थ्रेशोल्ड हमारा लेट्स से 25 हर्ट्ज है और हमारा जो अभी करंट फ्रीक्वेंसी है वो है 20 हर्ट्ज, तो फिर ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो इजेक्ट नहीं होंगे, लाइक दे आर नॉट, दे वोंट बी एमिटेड. सो बेसिकली एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है which is required to eject the electron, and that is called threshold frequency. If the frequency of the incoming light is below this threshold, no electrons will be emitted regardless of the intensity of the light. We should keep that in mind कि intensity से कोई फर्क नहीं पड़ता है उतना जब तक हमारा जो threshold level है उससे ऊपर नहीं हो, right? And let's come to the energy of the photons. Energy of the incident photons is given by
E इज इक्वल टू HF। ये जो H है हमारा, उसे हम प्लैंक्स कांस्टेंट बुलाते हैं, and F is the frequency, right? And Planck's constant का वैल्यू है 6.626 into 10 to the power minus 34 joules seconds, right? And F is the frequency of the light, we know that, right? Kinetic energy of emitted electrons, तो इसका जो kinetic energy होगा वो होगा HF minus phi. And what is phi? Phi is हमारा वर्क फंक्शन है ये। और वर्क फंक्शन क्या होता है? वो है बेसिकली मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल, राइट? Yeah. So with this, we'll be going and moving on to the next question. The next question is, consider a parallel plate capacitor whose plates ME. What is ME यहाँ पे? So basically एक parallel plate capacitor है, उसके values है ME. तो what is the ME they are asking? So in the context of parallel capacitor, जब हम parallel capacitor के बारे में बात करते हैं, ME is basically magnitude of electric field. Okay, हम इसे magnitude of electric field बुलाते हैं, right? और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है उस वो एक फॉर्मूला से आता है, लाइक वी नो इट इज V by D. V is what? The potential difference between the plates, and D is the distance between the plates. So these are the plates. So ये जो distance है और इसका जो potential difference है उससे हम electric field calculate करते हैं, right? The electric field is uniform between the plates and directed from the positive to the negative plate. Let's say हमारा ये positive plate है and this is negative plate. So हमारा जो electric field है वो uniform होगा, right? वो uniform होगा और फिर हमारा जो positive plate है उससे negative plate तक जाएगा. So we got to know what exactly is ME in the context of parallel plate capacitor. अभी जाते हैं हम अपने next question पे और वो है what is motion, and this will be our final question for today. Motion is the change in the position of an object with respect to time, right? So let's say हम लोगों ने अभी इतनी बारी कर दी है, let's say time is equal to 0 पे हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, ठीक है? और 10 सेकेंड के बाद ऑब्जेक्ट इज हियर, और ये जो अभी मूवमेंट हुआ इस चीज को हम मोशन बोलते हैं. सो ये भी फोर्स की तरह एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में. और जब मोशन की बात करते हैं बहुत से ऐसे टाइप्स ऑफ मोशन रहता है, जैसे कि लीनियर मोशन. लीनियर मोशन का ये मतलब है स्ट्रेट लाइन में होता है मोशन. लीनियर का मतलब वही है ना, स्ट्रेट लाइन में होना. तो स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन का मोशन का एग्जांपल ले लेता है. चलो ऐसे व्हाट डू यू से, कार मूव कर रहा है स्ट्रेट रोड पे, तो सो दैट इज अ स्ट्रेट लाइन लीनियर मोशन. और रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन बेसिकली ऐसा होता है कि एक पिवोट होता है या फिर एक सेंटर पॉइंट एक्सिस होता है, ठीक है? तो उस पॉइंट पे ये रोटेट करता रहता है. एग्जाम्पल है स्पिनिंग टॉप, राइट? वो जो एक स्पिनिंग टॉप होता है ना, तो दैट रोटेट्स ऑन दिस एक्सिस. और हमारा अर्थ ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो वो भी स्पिन करता है बेसिकली अराउंड इट्स इमेजिनरी एक्सिस, राइट? पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन लाइक द नेम सजेस्ट्स वो रेगुलर इंटरवल्स पे रिपीट होता है, जैसे पेंडुलम का स्विंगिंग. लाइक पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर से वापस यही पोजीशन रिपीट होगा, राइट? और फिर जब हम मोशन के बारे में बात करते हैं
इसमें की कॉन्सेप्ट्स थोड़े से है, वो है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वो एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन विथ डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। और एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो फटाफट से हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस रिवाइज कर लेते हैं। हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहाँ पे v फाइनल है, फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है और टाइम t तो टाइम है। और सेकंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इज द डिस्प्लेसमेंट और बाकी सब सेम। एंड देन फाइनली हमारा लास्ट इक्वेशन है v square is equal to u square plus 2as. So for today we've covered questions related to photoelectric effect, motion, force, and then electricity, electric fields, and then magnetic momentum. So we've had this diverse questions जो हमने cover की है. I'll be covering the other questions soon in our upcoming sessions. So आज आप जाइएगा, revise कीजिएगा, and then while you're revising, while you're going through this video, make sure that you revise related topics to this. Let's just say हम friction revise कर रहे हैं, friction के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप normal force और फिर friction over a plank ऐसी चीजें भी revise कर लीजिए, so that आपका जो है concept पूरा सॉलिड हो जाएगा, आपके दिमाग में पूरा फिक्स हो जाएगा. Telling this, I'll be ending this session. Thank you so much. Thanks, Amodini. Thank you. Yes, sir.